Hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education, and in this video we are going to cover the second minor connector that joins the indirect or you can say auxiliary rest to the major connector. Okay, तो this is the second type of minor connector. ठीक है, तो इसमें ये डायग्राम से ही समझ में आ रहा होगा कि ये 90 डिग्री का होता है एंड इट इज़ अवे फ्रॉम दी जिंजाइवल मार्जिन. कितना अवे होता है? 3 mm. ओके, तो ये अपन ने मेजर कनेक्टर्स में बहुत बार पढ़ा भी हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले इट अराइजेज एट राइट एंगल. यू कैन सी द राइट एंगल फ्रॉम द मेजर कनेक्टर विथ राउंडेड जंक्शन. हम शार्प क्यों नहीं रखते? क्योंकि पेशेंट को हर्ट होगा, इसलिए हमेशा हम राउंडेड रखते हैं. एंड डिज़ाइन टू फिट इनटू द एम्ब्रेजर स्पेस. यू कैन सी हेयर. ओके, देन surface of minor connector which connects the tooth is called the proximal plate, and the surface of tooth contacted by this proximal plate is called the guiding plane. Very important, these 2 points are very important, please note that down. Then design consideration देखना है, छोटू सा ही है ये. design consideration में क्या होगा? We remove the undercut along the proximal surface. Then guide plane will be prepared during prosthetic mouth preparation, and after that the minor connector and the proximal plate will be fabricated. Okay, तो सबसे पहले हमने क्या किया? undercuts को proximal surface से remove किया, then guide plane बनाया while preparing for the prosthetic mouth preparation. After that हमने minor connector और proximal plate को fabricate कर दिया. ठीक है, now this design consideration क्या है? area where minor connector is to be designed should be डिवॉइड ऑफ अंडरकट. उसमें अंडरकट नहीं होने चाहिए एंड इट शुड बी पैरेलल टू द पाथ ऑफ इंसर्शन. हियर यू कैन सी द पैरेलल टू द पाथ ऑफ इंसर्शन. ओके, सो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन academics, and if it does then I would be really grateful. And yeah, thank you so much for watching this video. Do let me know if these videos are helping you out or not, and if you want any correction, if you want any type of suggestion you have, you can freely write that down in a comment section. And yeah, thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.